Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss accounting for factory overhead, and in this regard we will have a discussion on budgeting of factory overheads कि हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को बजट कैसे करते हैं. बजट इज बेसिकली the operating plans of the management which are expressed in quantitative terms. जब हम लोग अपने ऑपरेटिंग प्लान्स को, जो ऑपरेशंस के प्लान्स होते हैं कि हम लोगों ने कितनी सेल्स करनी है, कितने हम लोगों ने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, कितने हम लोगों ने उस प्रोडक्शन के लिए हमें कितना लेबर चाहिए, हमें उस प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल्स चाहिए, व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर दैट प्रोडक्शन. सो ऑल दीज आर ऑपरेटिंग प्लान्स, and for all those operating plans, when they are expressed in quantitative terms, mean quantities mean in terms of labor hours, in terms of material units, for example kgs, for example liters, for example pounds, for example number of units. तो इस तरीके से, और in terms of rupees, dollars और currencies, तो उनको हम लोग budgets बोलते हैं. So all the management's operating plans which a management plan for their operations to run the company, to run the operations of the company, तो उसके लिए जितने भी हम लोग plans बनाते हैं, and when those plans are expressed or written in quantities, those plans are called budgets. तो basically तो operating plans होते हैं जो हम future के लिए बना रहे होते हैं, for the future period, for a month, for a quarter or a 6 month or a year or 5 years. तो जो भी उसका पीरियड हो सकता है, तो जो मैनेजमेंट के ऑपरेटिंग प्लान्स होते हैं, जो हम लोग मैनेजमेंट जो अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए या अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए उसको एस्टिमेट करने के लिए जो प्लान्स बनाते हैं, उनको हम लोग जब क्वांटिटीज में शो कर देते हैं, क्वांटिटीज में लिख देते हैं, तो उनको हम लोग बजट्स बोलते हैं. When we prepare budgets for the costs of materials, costs of labor, costs of factory overhead. तो यहाँ पे हम लोग specifically factory overhead की जब बात करते हैं, तो when we budget the factory overheads, we need to have segregate the fixed and variable costs. हमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का मालूम होना चाहिए कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी हैं और वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी हैं. फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अपनी प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर, हमने अपने प्रीवियस जो भी हमारी जो थे लेक्चर के कंपोनेंट्स, उसमें हम लोगों ने अपनी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट मेथड्स सीखे थे, जिसमें ऑब्जर्वेशन मेथड था और जिसमें कुछ मैथमेटिकल मेथड्स थे. हम ये देखते हैं कि कॉस्ट जो है वो हमारी फिक्स्ड है, तो कौन सी फिक्स्ड है, कौन सी वेरिएबल है, कितनी फिक्स्ड हैं और कितनी वेरिएबल्स हैं, इन तमाम चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं. तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट आर फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन डिटेल्स. Then we have a combination of fixed and variable costs. Some costs we have, in particularly in factory overheads, we have some costs which have both of the components fixed and variables. Fixed and variable costs जब दोनों मिलके इकट्ठी होती हैं, तो उनको हम लोग semi variable costs और mixed costs बोलते हैं. तो when there are mixed costs, तो then there is another challenge कि how we will divide that mixed cost into fixed component and variable component. So the challenge is to segregate the fixed and variable components of the cost, and for that purpose we have discussed in detail and have learned to calculate the fixed and or segregate fixed and variable cost by using three methods, that is high-low method, that is the scatter graph method, and that is regression analysis method. For by using those methods we can segregate fixed and variable components of the costs, और उसको यूज करके फिर हम लोग जो है वो अपने बजट्स बना सकते हैं. एंड बाय यूजिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स, बाय सेग्रीगेटिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट, वी कैन ड्राइव अ formula for every cost, for each and every component of the cost of factory overhead. For example, if we have a multiple costs in factory overhead, just like indirect labor, indirect materials, or insurance, factory depreciation, factory taxes, or you must say factory supplies, or you must say factory janitorial staffs,
या janitorial costs, then other than repair and maintenance costs of the machinery, and heating and lighting costs of the factory. All those are the examples of factory overhead costs. And we decide that what are fixed factory overhead costs and what are variable factory overhead costs. And if there is a cost with a combination of fixed and variable, we segregate fixed and variable part of the cost, and we drive an इक्वेशन फॉर एवरी कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट. हम तमाम कॉस्ट जितनी भी मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी हैं, उन तमाम कॉस्ट को हम लोग एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, एक फार्मूला उसका कैलकुलेट करते हैं जो हमें ये बताता है कि वो कॉस्ट का फंक्शन क्या है, वो कॉस्ट का फार्मूला क्या है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट, वी कैन प्रिडिक्ट, वी कैन फोरकास्ट, वी कैन एस्टिमेट द कॉस्ट फॉर द फ्यूचर. दैट आर द बजट्स. तो बजट्स बनाने के लिए हमें वो फार्मूलाज चाहिए ताकि हम लोग बजट्स के लिए हम अपने फ्यूचर के एस्टीमेट्स और फोरकास्ट को कैलकुलेट कर सकें. और जैसे मैंने आपको 3 जो मेथड्स बनाए थे, उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब हम लोग तीनों मेथड्स में एक कॉस्ट फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, तो उसमें कोई सा भी एक्टिविटी लेवल रख के उसको कॉस्ट को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फॉर द फ्यूचर कैलकुलेट कर सकते हैं. देन वी प्रिपेयर बजट्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. फिर हम लोग बजट को डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बनाते हैं, बिकॉज हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमने अपनी कॉस्ट को कहाँ पे मैनेज करना है. अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम लोग उसकी डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं, और फिर उसमें से फैसला करते हैं कि हमारे लिए जो फिजिबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन सा है, जहां पे हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी या मिनिमम होती है. तो इस तरह की जो टेक्निक होती है उसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजटिंग कहते हैं. व्हेन वी प्रिपेयर बजट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शंस, एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज, those budgets are called flexible budgets. And the technique of budgeting, to budget at different level of productions, that technique is called flexible budgeting techniques. And in this technique, we prepare budgets by using all the formulas of the costs, which we have already discussed over here, when we segregate fixed and variable costs by using different methods of segregations of those costs. तो हम लोग क्या करते हैं कि उन फॉर्मूलाज को यूज करके हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शंस के ऊपर बजट्स बनाते हैं, और उस बजट को हम लोग जो है वो फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं. एंड बाय यूजिंग दैट फ्लेक्सिबल बजट, द मैनेजमेंट कैन प्लान फॉर द फ्यूचर एंड कंट्रोल द कॉस्ट फॉर द फ्यूचर, because we have different level of production, and at different level of production we have different costs, and we see that at what level our cost is minimum, and at that level we want to operate. और उस लिहाज से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है वो इस लेवल के ऊपर आती है, तो इसलिए हमें इतने यूनिट बनाने चाहिए या इतने यूनिट जो है वो हमें प्रोड्यूस करने चाहिए फॉर द फ्यूचर पीरियड. इन दिस वे वी कैन प्लान आवर कॉस्ट वेरी वेल एंड कंट्रोल आवर कॉस्ट, मॉनिटर the plans according to whether our activities are according to our plans. That is the controlling. So can we and minimizing of the cost is the objective of the controlling. And by applying flexible budgeting technique, we can control our costs, we can compare our costs, we can have our level where our cost is the minimum. That's why we can use flexible budgeting technique for controlling and planning of our cost in efficient way. And management can use flexible budgeting technique as a valuable tool for the planning and controlling of the costs. Here we have a flexible budget example. A flexible budget is the budget that shows estimated cost at different production volumes. Different production volumes के ऊपर जब हम लोग estimated costs calculate करते हैं तो उनको हम लोग flexible budget कहते हैं. Here we have example of a flexible budget of factory overheads, because our topic is factory overhead, and such flexible budgets can be prepared for every item in our accounts, in our
यू मस्ट से कॉस्ट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल मटेरियल की हम फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं, हम लेबर का फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं, हम फैक्ट्री ओवरहेड के फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं, हम सेल्स का फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं. For every item we can calculate or we can prepare flexible budgets, and we can prepare budgets at different level of productions or different level of activities. तो हमने यहाँ पे चूंकि हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की एग्जांपल है, हम फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्कस कर रहे हैं, तो here we have an example of preparing the flexible budget of factory overhead. We have an illustration, or you must say an example where we have three levels of production, that is 1,000, 10,000 units, 20,000 units, and 40,000 units. At 10,000 units, we have a variable cost per unit, that is 5 per unit, which might be calculated by using three different methods, which is high-low method, which is scatter graph method, or which is regression analysis method, and the fixed cost, which is 50,000, that can also be derived from our previous data. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री मेथड्स, तो हम लोगों ने इनको जो है वो तीन वेरिएबल कॉस्ट भी आइडेंटिफाई कर ली और फिक्स कॉस्ट भी आइडेंटिफाई कर ली, जो कि हम लोग एक फार्मूला के जरिए से इसका एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, या हम लोगों ने जो डिफरेंट मेथड्स सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट का लगा के हमने इसकी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया. फिर हम लोगों ने ये कहा कि 10,000 अगर हम यूनिट्स बनाते हैं और एक यूनिट के ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट आती है विच वेरीज विद द प्रोडक्शन वॉल्यूम, दैट इज 5, तो 10,000 के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, 10,000 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 50,000 हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी. अब 20,000 यूनिट्स के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 100,000. एंड 40,000 यूनिट्स के ऊपर हमारी पास कितनी कॉस्ट आएगी, दैट इज 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200,000. इट मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज द सेम एट थ्री लेवल्स, 5. Here it is 5, here it is 5, here it is 5, but the total variable cost changes with the change in activity. Here 10,000 activity, the cost is 50,000. Here 20,000 activity, cost is 100,000. Here 40,000 activity, cost is 200,000. तो इस लिहाज से हम लोगों ने ये कहा कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट के साथ जब हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है. एंड वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज पर पीरियड, और per month fixed cost is identified as 50,000. So at 10,000 level, this is 50,000. At 20,000 level, this is also 50,000. At 40,000 level, this is also 50,000. So at every level of the cost, at every level of the activity, the cost is the same. So that is fixed cost. तो इसलिए इस तरह से जब हमने इन दोनों को टोटल किया तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ गई. यहाँ पे भी हमने टोटल किया तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ गई. एंड इन दिस वे एट दिस लेवल वी हैव टोटल फैक्ट्री ओवरहेड cost, that is 2,50,000. Here we have 1,50,000, and here we have 100,000. When we have calculated per unit cost of total factory overhead, total per unit cost of factory overhead, that is called 100,000 divided by 10,000, so that is 10 per unit. अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 1,50,000 and divided by 20,000, that is 7.5 per unit. And 2,50,000 divided by 40,000, so that is 6.25 per unit. So in this way we can see that at 40,000 activity level or 40,000 units we have minimum cost. So we will try our operations at 40,000 because at this level we have minimum cost. In this way we can plan our activities accurately, efficiently, and we can control our cost accordingly. अगर हम लोग 20,000 रुपए के ऊपर काम करेंगे तो हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी, और अगर हम 10,000 पे काम करेंगे तो हमारी कॉस्ट और ज्यादा होगी. इट मींस इट इज feasible to work on 40,000 units because at this level we have minimum cost which is our objective of cost accounting. कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारी कॉस्ट कम अज कम होनी चाहिए. अब ये कॉस्ट क्यों कम हो रही है? बिकॉज दैट कॉस्ट हैव टू कंपोनेंट्स, दैट इज वन इज वेरिएबल कंपोनेंट एंड दैट इज सेकंड वन इज फिक्स्ड कंपोनेंट. when we see variable component, तो variable component is 5 per unit at every level. 50,000 divided by 10,000, 5. 100,000 divided by 20,000, that is 5. 200,000 divided by 40,000, that is 5. But see the fixed cost. When we see 50,000 divided by 10,000, that is
5 पर यूनिट, 5 दिस एंड 5 दिस, टोटल 10 हो गई। जब हमने 50,000 यूनिट्स को 20,000 सॉरी 50,000 कॉस्ट को 20,000 यूनिट्स पे डिवाइड किया तो कॉस्ट इज 2.5 पर यूनिट। 5 is variable cost and 2.5 is the fixed cost per unit, so then the total cost is 7.5. It means when we have increased our units, the cost per unit has decreased, and this decrease is due to fixed cost, because here fixed cost 50,000 is allocated or distributed among 10,000 units, but here 50,000 cost is distributed among 20,000 units, and here 50,000 cost is distributed among 40,000 units. So here per unit fixed cost is 1.25 and 5 per unit variable cost and 1.25 is fixed cost per unit. That's why overall cost is 6.25. In this way we can see that when activity increases, cost per unit decreases. This is basically the behavior of mixed cost. And when we see variable cost, the cost when activity increases, total cost increases, but per unit variable cost remains the same. This is the behavior of variable cost. And when we see fixed cost irrespective of level of activities, at all levels it is the same. That is the fixed cost. And when we calculate per unit fixed cost, it is decreasing. When activity or units increases, the cost per unit or fixed cost per unit is decreasing. So this has inverse relationship. So variable cost has direct relationship, but fixed cost has inverse relationship. This has resulted into inverse relationship in the overall cost. Cost is increasing but decreasing effect के साथ हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन डिक्रीजिंग इफेक्ट के साथ बढ़ रही है. सो हम ये इस तरीके से हम कैसे देख सकते हैं कि हमारी कॉस्ट किस लेवल के ऊपर सबसे कम है, वो हम फ्लेक्सिबल बजट की टेक्निक यूज करके देख सकते हैं. हम डिफरेंट लेवल के ऊपर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि हमारी कॉस्ट सबसे कम किस लेवल के ऊपर है. इस तरह से हम लोग इस फ्लेक्सिबल बजटिंग टेक्निक को यूज करके अपने बजट को बेहतर तरीके से बना सकते हैं और हम अपनी कॉस्ट को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं.